Okay, Ji. So I'm going to be screen sharing. Okay. Will we come up with a research question in today's session with background, or will we do it by ourselves? I will show you the background search very briefly because there is a separate section, there is a separate session on background search. लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगी. Background search आपने खुद करनी होगी बाद में. How can we be sure that the question is good enough to be worked upon? That is a full protocol. It's an analysis that is applied to the question. It is called finer analysis, and we will discuss it today, inshallah. Okay, G. And let me screen share with you it's a simple Word document that I will be working on just to show you, how the whole thing works. ठीक है जी? Okay. So there's a Word document open in front of you. I'm going to increase the visibility here. The first question that I asked you was, what is the root of your research question? Like why, you're coming up with a research question, and what type of a research question are you asking? आपके जहन में कोई टॉपिक है और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आए थे, ओपियोइड यूज के आए थे, breast feeding के आए थे. They were very, very interesting topics. Today, I'm going to just work with a dummy topic, and that is medical ethics. So I think of something like, I want to work on a research जो medical ethics के बारे में. This is what I did with the first group as well. So it's just to be fair to everybody कि हम medical ethics की बात कर रहे हैं. Now, the root of my question, I can ask so many questions. Let's say that I ask a why question about medical ethics. Something why about medical ethics. Let me just, yeah. So I can say, why is medical ethics lacking in medics today? I've made an observation. मुझे लगता है कि medics are poor in medical. Sorry, is there a question? अगर हम pilot, बच्चे, the thing is, this session is not about piloting. So I'm not going to answer those questions. I told you to ask me a question or give me a comment that will help me in this session. And this session is about the research question. Okay? So let's not, digress from the topic. The why question is, why is medical ethics lacking in medics today? So this is one question that I'm asking. Then there's what. What can be so many. What is the best way to teach medical ethics to school children? A very unique question. So I am basically brainstorming using all these question starters, using all these trigger terms about the topic that I want to work with. Then is when. So we can say, when can be, basically it's a temporal relationship. So ज़रूरी नहीं है कि मेरा सवाल when से शुरू हो, but I can say what is the main difference between knowledge of medical ethics in 1970 versus 2020. So I'm talking about a 50-year period जिसमें मैंने difference देखना है कि 1970 में जो medics थे या जो graduate कर रहे थे और जो 2020 में हैं, इनकी ethics के level में क्या फर्क है. It's a temporal study. Okay. Then is who. And who is, it tells you who is at risk, who may be affected, who needs it, So a who question can be, who is most affected in case of lack of knowledge about medical ethics. And then there is where. And where medical ethics में where का सवाल बनाना बहुत मुश्किल है because it is uniform. Okay, but we can say that where
is, well, I need to come up with a question, but I'm blocking. Can one of you come up with a question? See, यहाँ पे where लिखा हुआ है, और where में ये है कि ये outbreaks जैसे demographically या geographically एक काम कहाँ हो रहा है, ये उसके बारे में है. So tell me if you come up with an idea about where related to medical ethics. Oh, okay. I need to go and pick up my baby. Okay, ji. Oh, I see. Good. So there has been some brains. Where is medical ethics best practice? Very good. Where in the world are neglected the most? Very good. See, where are poor medical? Well, they are affecting them everywhere. Okay, ji. Very good. Lacking. Very good. Can we begin for that's wow. Okay, Adil Murad. Where can we begin with introducing medical ethics for medics? Excellent. Where is it best performed? Um, from where we study the topics before the session. There's no specific book, but you're just going to follow the sessions. It's open. Best practice in rural versus urban. Very good. Excellent. So those are your where questions. Many where questions. Alhamdulillah. So यहाँ से आप एक रिसर्च क्वेश्चन की रूट डालते हैं कि मैं ये पूछना चाहता हूँ या ये पूछना चाहती हूँ अपने टॉपिक के बारे में. The next is, what is a problem that you identify as genuinely requiring a solution? So medical ethics ke bare mein, as an academic, I mean, I'll tell you what I think. Everybody will have a different perspective. But I'm doing this exercise in front of you as if this is my research question. So what is a problem that you identify? The main problem that I identify as requiring a problem is the education of medical ethics. I believe that if we educate people better in medical ethics, we will not have so many unethical things happening around us. So I can say a problem is that there is a lack of education about medical ethics at all levels of medical education. Okay, so this is a genuine problem that I recognized. To me, जो मेरा experience है, क्योंकि हर किसी ने जो topic select किया होगा उसमें उनका कोई experience होगा. जो मेरा experience है as an academic and as a medic, that is that it's a lack of education. People just don't know about medical ethics, and teachers are not teaching medical ethics, and the role models that we have maybe are not practicing ethically. Okay, then what population this problem is affecting? It's affecting everybody. Okay, but let's just say कि मैं patients को select करती हूँ. It's the patients who are most affected because of lack of, although इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि there are medics who are affected. No, unethical practice करने वाले sue होते हैं, suffer होते हैं. People hate them. They may become depressed. They're bad practitioners. They will go to hell. I mean, there's so many things. Lekin, I believe okay, for my practical purposes, I'm going to focus on patients. Okay.
So, population that the problem is affecting, मेरी जो problem है, is patient. Yes, 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 yes. Very good, very good. Here you go. Here you go. Haha. Okay. Then is three components of the problem. What is the cause? So I've already identified the cause. Cause is lack of education. What is the effect? Unethical. इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, जो दिमाग में आता जाता है वो लिखते जाना है, बस डब्बे भरते जाना है. Unethical practices. Okay. And what is the remedy? Is better education. Let me get her a cookie. There you go. Okay. So, for my research problem, lack of education is a cause, unethical practices is the result of that cause, and better education is going to help. Okay. An ideal world solution for the problem you identified. Now, I'm going to leave this open. I want to know how all of you are thinking. Write, write a comment in which you mention an ideal world solution for this problem. In an ideal world, somewhere, even चले पाकिस्तान में भी या जहां भी, आइडियल वर्ल्ड सॉल्यूशन एक सेंटेंस में लिख के भेजें. जो प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ उसका आइडियल वर्ल्ड सॉल्यूशन क्या है. Yes, to Leman, a research question can begin with how as well. Open communication at the end of each visit with the physician. Okay, so I'm going to copy paste this comment. Okay, Kuban ने लिख के भेजा है. I want all of you to write a solution. जितने लोग लिख के भेजें, and when I get 5 solutions, then I'll proceed because I want you to think. I also want to make sure कि 23 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे. Mhm. And then I'm going to name people and ask them. Is that okay? People have started writing. Okay. Acha ji. To include medical ethics during undergraduate curriculum, educating medics about ethics, communication skill, professionalism must be practiced at each level of medics, like starting from class to hospital. Very good. Okay. So let's just say जो मैंने solution identify किया है, that is open communication at the end of each visit with the physician. ठीक है, and since I am dealing with the education part, so I will write educate practitioners about open communication at the end of each visit with the physician. So मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको सेशन के एंड में ओपन कम्युनिकेशन सेशंस करने आने चाहिए. This is an all-encompassing solution actually. This is a very, very deep solution that has many components. Medical ethics should be a subject in undergrad, helping students practice by giving them scenarios. Very good, very good. All of them are applicable. I'm glad that all of us are thinking. So educate practitioners about open communication, or this is what I have identified. 3 steps to reach the ideal world solution. जो मैंने ideal world solution identify किया है, उसके कौन से ऐसे कौन से 3 steps हैं जो मुझे इस तक पहुंचा देंगे. So basically what I'm asking is step number 1, teach ethics and communication to medical and nursing.
undergrads. Okay. Step number 2 is allow practice of such interactions in simulated environments. Now, please don't think कि आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए. ये मैं सोच रही हूँ, ये मैं रिसर्च बना रही हूँ. I'm just showing you an example कि आप भी ऐसे बनाएंगे इंशाल्लाह. And the third one is test medics, sorry, test medics in their ability to communicate effectively with different patients. So मैंने सोचा कि 3 ऐसे तरीके हैं जिससे मैं अपना ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती हूँ. And I wrote all those steps. Okay, to give real life first hand excellent, hold those who show unethical accountable. Yeah, I know, I wish. So मैंने ये सोचा कि अगर मेरे पास ये 3 चीजें हों तो मैं मेडिकल एथिक्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा कर सकती हूँ. मैं अपना जो मेरा वो लैक ऑफ एजुकेशन वाला प्रॉब्लम है मैं वो ओवरकम कर सकती हूँ. मैं ये कह रही हूँ कि बिगिनिंग एट द अंडरग्रेड करिकुलम मैं वहां से एथिक्स और कम्युनिकेशन मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स को सिखाऊं. फिर मैं उनको प्रैक्टिस कराऊं इन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव बातें होती हैं. और मैं उनको ऐसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डालूं जहां पे वो ये कर रहे हो, वो एक्टिंग कर रहे हो. So anybody from Peshawar Medical College will know that we used to do that in the skill stations and so many things. फिर टेस्ट मेडिक्स इन देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. फिर उनको बाकायदा मैं टेस्ट करूं. मैं उनको कहूं कि आपका पास फेल का इशू है, आपको एथिक्स आनी चाहिए. Here you go, पापा पापा. Okay. So then what are the 3 main hurdles? Now this requires a lot of brainstorming. देखो ये तीनों चीजें जो मैंने यहाँ लिखी है ना, इसको आपने कैसे करना है. इसको आप यहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पेस्ट करें. अब मैं 3 मेन हर्डल्स ढूंढ रही हूँ कि वो कौन सी रुकावटें हैं जो मुझे यहाँ तक नहीं पहुंचने देती. टीच एथिक्स एंड कम्युनिकेशन टू अंडरग्रेड्स, इसमें कौन सी सबसे बड़ी रुकावट है. वैसे लेट्स सी वाकई आप लोगों का क्या ख्याल है, इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है. No, they should not be hypothetical, बच्चे. Suleiman, they should be actually achievable. We're not talking about utopia. Not part of curriculum. Excellent. जो सबसे बड़ा मुझे मसला है ना, सबसे बड़ी जो मेरी पख है, वो है हमारी प्यारी पीएमडीसी, जो बेचारी कभी पीएमसी बन जाती है और कभी पीएमडीसी बन जाती है और कुछ करने लगती है. Yes. So that is my main hurdle. Allow practice of each of such interactions in simulated environments. इसमें क्या रुकावट है. चलो पीएमडीसी मान गई, उसने कहा कि नहीं सब ने एथिक्स पढ़नी है. हमने एक सफे का गंदा सा करिकुलम टाइप रिटर्न डाला हुआ है अपनी वेबसाइट पे और सब ने पढ़नी है एथिक्स. आप बताओ कि उन्होंने इजाजत दे दी. सिमुलेटेड एनवायरनमेंट्स, कंट्रोल एनवायरनमेंट्स में इस प्रैक्टिस में क्या रुकावट है. अब वो बोलो. शाबाश 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 शाबाश. Mentors, and yes, resources. So Khuban and Noor, very good, very good. This is girl power. Sorry, guys. Okay. So lack of mentors, resources. जी हाँ, resources भी हैं बच्चे. करोड़ों रुपए की सिमुलेशन लैब्स बनाई हुई हैं जो किसी को नहीं इस्तेमाल करनी आती. Anyway, सबसे बड़ी बात है. फिर टेस्ट मेडिक्स इन देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट. इसमें आप नोट करोगे जैसे जैसे आप करीब होते हो ना अपने गोल के, वो जो पहले आप बातें लिख रहे होते हो वो उसी के ऊपर आपको बिल्ड करना होता है. सो बेसिकली इट्स पीएमडीसी एंड लैक ऑफ मेंटर्स. यही मसला है ना इसमें भी. यानी टेस्टिंग आप तब करोगे जब आपके पास इजाजत हो करने की और आपके पास लेट मी सी. सो ये दोनों बातें यहाँ पे अप्लाई करती हैं, एक और फिर ये भी अप्लाई करती है.
So see how this exercise actually expands. It expands your observation into an actual project. It expands your observation into something that you can do, जिसके बारे में आप ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, जिसका आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसके लिए आप कितने सारे और काम कर सकते हैं. ओके, द एक्सरसाइज बेसिकली इज टू एक्सपैंड योर होराइजंस. द एक्सरसाइज इज नॉट meant to give you a research in hand. Exercise is to get you started on thinking like a researcher. अब मैंने ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर दी. ओके, अब इससे मैं आगे जाती हूँ. अच्छा, मेरा घंटा यहाँ बज गया है. सो आफ्टर 7 मिनट्स द लाइन इज गोइंग टू ड्रॉप, या मैं खुद ही ड्रॉप कर दूंगी. फिर आपकी 10 मिनट्स की एक ब्रेक होगी, और उसके बाद हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे. ठीक है, ये समझ लो अच्छी तरह. ओके, सो बेस्ट मीन्स टू ओवरकमिंग द हर्डल्स टू द सोल्यूशन. अब बताओ. ऊपर पूरी चीज लिखी हुई है. सबसे बड़ी रुकावट पीएमडीसी है, जो हमारे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी नहीं उसको अंदर से देखा. मतलब देखा है लेकिन कभी मैं उसमें रही नहीं हूँ. आई बीन एन एडवाइजर. सो बट एक पीएमडीसी है, फिर लैक ऑफ मेंटोर्स है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, और फिर हम टेस्टिंग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीजें हमारी कमजोर हैं. अब बताओ, बेस्ट मीन्स टू ओवरकमिंग द हर्डल. बेस्ट मीन्स, अभी you're just starting. What is the best means? Take inspiration from international curriculum. Suleiman. Okay. बच्चे, इंटरनेशनल करिकुला जो है ना, हाँ, यस ऑफ कोर्स वी कैन टेक इंस्पिरेशन. लेकिन थिंक अबाउट, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे मुल्क में एथिक्स नहीं है, एंड एथिक्स इज वेरी वेरी कल्चर डिपेंडेंट. सो वी नीड टू ओरिजिनेट ideals within our own culture, within our own setup. But you're right, this is a solution. Introduce moral and Islamic perspective of need to follow. लड़के शुरू हो गए हैं. अच्छा, stimulate PMDC. That's really cute. Stimulate PMDC. उन्हें कोनिया मारे. हेलो, आप प्लीज हमारा काम करें. बट दिस इज राइट, आप सब ठीक कह रहे हैं. हर लेवल पे सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट यू स्टार्ट थिंकिंग एट एवरी लेवल कि यार एथिक्स पढ़ानी है, किसी तरह एथिक्स के हालात अच्छे करने हैं. अब हम क्या करें? सो उरूज तो स्टिमुलेट पीएमडीसी, सबसे अच्छी बात तो उरूज ने कर दी है. फिर उमर कह रहे हैं ब्रिंग रिफॉर्म्स टू द सिस्टम. दैट इज समथिंग लाइक स्टिमुलेशन, लेकिन जरा पॉलिटिकल है, साफ सुथरी सी बात है. ठीक है. उसके बाद क्या हो रहा है? Introduce the moral and Islamic perspective of need to follow to medical ethics, take inspiration. फिर अच्छा जी, अब इसमें stimulate PMDC आ गया. Convince PMDC by evidence. Do research first. All right, Kuban, here you go. Convince PMDC. Convince. And there has been research. वो अभी मैं आपको अगले सेशन में निकाल के दिखाऊंगी कि वो मौजूद है. Platform where this problem can be highlighted and feedback to medical staff. Of course, there are very good suggestion. ऐसे platforms होने चाहिए जहां लोग अपने concerns discuss करें. पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अगर कुछ है, पता नहीं है कि नहीं है. एक पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, जिसको अब तो खैर मैं पाकिस्तान पोलियो एसोसिएशन कहती हूँ. वो बेचारी सिर्फ पोलियो के कतरे देने के लिए रह गई है. बट एनीवे, ऑफ कोर्स देयर आर प्लेटफॉर्म्स जहां पे ये बातें डिस्कस हो सकती हैं. सो बेस्ट मीन्स ऑफ ओवरकमिंग द हर्डल्स जो बताए गए हैं, और मैं 1 2 3 ऊपर से ही देख रही हूँ. ठीक है. सबसे पहले तो जो बात की गई है वो है स्टिम्युलेट, कन्विंस, मे बी पुश पीएमडीसी. ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे रहे हैं. फिर लैक ऑफ मेंटोर्स है, इस तरह है. सो वो किसी ने कहा कि दूसरे मुल्कों के करिकुला देखें. सो टू हैव ए टास्क फोर्स टू रिव्यू इंटरनेशनल करिकुला इन एथिक्स. ठीक है, एक बेस्ट न्यूज है, बहुत अच्छी बात है. ठीक है. फिर सबने ये कहा कि इसको हम इसकी अवेयरनेस लाएं और हम लोगों को ये कन्विंस करें. सो ये मेरे ख्याल में आदिल ने कहा होगा, क्योंकि उसने अपनी जो भेजी थी उसमें ये लिखा था कि पब्लिश रिसर्च. एक सोल्यूशन उसने ये लिखा था, पब्लिश रिसर्च. सो आई विल राइट दैट हियर, पब्लिश एविडेंस ऑफ लैक ऑफ एथिक्स और नॉलेज अबाउट एथिक्स. ठीक है जी.
Acha. So we have 3 minutes now. Availability of best means in your surroundings. ये एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं 3 मिनट में. अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट मीन्स, ये ऊपर आपने सारी बातें लिखी है ना, अब बताएं कि आपकी सराउंडिंग में आपको क्या चीज अवेलेबल है जिससे आप ये प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं. वो क्या चीज है? दैट इज द क्वेश्चन. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेक यू टू योर रिसर्च क्वेश्चन. अब बताओ. शाबाश 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 शाबाश. अच्छा, 2 लोगों ने बोल दिया ऑलरेडी. Lots of data. All right, there must be a punishment. I like you, Uruj. You think like me. You know, डंडा मारो इनको सेट करो, ये गंदे बच्चे हैं सारे. So, but yeah, of course, in order to punish them, बच्चे, you need data. You need evidence. ठीक है? I agree with Fuban here. Searching from past data, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. हामिद भी ठीक कह रहे हैं. बेसिकली द बेस्ट मीन्स, जो यहाँ बैठ के हम जूम पे अब बैठे हुए हैं और हम ये प्रॉब्लम रो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है, इस तरह करके, इज फर्निशिंग एविडेंस. I mean, you can collect a lot of data on a daily basis about lack of ethics. Places to practice. Simulation labs. नूर कह रही हैं कि हमारे पास simulation labs होनी चाहिए. But if you think about it, simulation labs cost money. So in order for your institution or government to pay you money to make these simulation labs, you need data. ठीक है? The best means in our surroundings is to collect data, to collect evidence about lack of knowledge of medical ethics in. ठीक है जी. Okay, so we have 1 minute now. I'm going to stop this meeting here, and it's 9:40 um, at your side of the globe, and we're going to rejoin at 9:50. ठीक है जी. See you inshallah. Yes, yes, yes. I'm coming. I'm coming.